shut the hell up music. मेरा गेम प्ले अभी तक नहीं लिया गया. Let's continue. मैं चेहरा ठीक से आ रहा ना. Let me see. Looking damn good. Maybe. अभी तक कोई ज्वाइन नहीं किया तो हम कुछ भी कर सकते हैं. कुछ भी. Trust me. हम कुछ भी कर सकते हैं और किसी को नहीं मालूम चलेगा. Like I can eat this. Tasty. Let me open the chat. क्या पता कोई आकर के चैट करने लगे. Let me open it. Who are you? क्या नब टाइटल रखा हुआ है वीडियो का. उनको वीडियोस अरेंज करना होगा ऐसा सीरीज में जिसमें कि लगे कि एपिसोड्स है. मैं नहीं तो ऐसे कोई चैनल पे देखने आएगा नहीं मेरा. बट तब पर भी क्या Let us begin. Go. Damn. Let me finish this, okay? After finishing this, I'll start the stream. I got a whole bucket of this. वो भैया एक और खा ही ले क्या. तभी अभी तक कोई ज्वाइन नहीं किया है. चालू करने का फायदा क्या होगा. और बारिश हो रहा है. चलो गैरोल्ड तुम हम लोग कहीं जहाँ पे बारिश नहीं हो वहां पे चलते हैं. यहाँ पे बारिश नहीं होगा आई गेस. यहाँ बारिश नहीं आ रहा. काफी तीता है. It's fucking chilly. So I got my friend here. Save the day. A paper boat a day saves your day. Trust me. हम क्या कर रहे हैं. अकेले प्रमोशन कर रहे हैं क्या प्रोडक्ट्स का. ये विचित्र का कम फूड रिव्यू ज्यादा लग रहा है हमको. भूख लगा हुआ है और कोई ज्वाइन भी नहीं किया है. क्या करे चालू करके. ऐसे भी कुछ देखता नहीं हो. बट ये कहां से आया. चालू करने वाले हम लाइव स्ट्रीम. क्या खाना. समोसा खा रहा ब्रदर. एक और बता के रखा है. लास्ट में खाएंगे. समोसा खाएगा. बोलो you wanna eat this? Get the hell out of here. I'm not giving shit to you. तेरा वॉचिंग नहीं दिखा. हमको लगा कोई नहीं है. मैं रोटी खाते रह जा पेजेंट. हम तो समोसा और पेपर बोट पी रहे हैं. वाह 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 वाह. नूब रोटी खाता है. कोई नहीं. हम लोग अपना धंधा चालू करते हैं यहाँ पे. That is killing monsters. I mean not killing monsters. Okay. हम लोग को अभी जाना है कहाँ पे. रिटर्न टू डैंडलाइन. सो लास्ट एपिसोड में हम क्या किए थे ये हमको अच्छा से याद है. हम बता देते हैं. किसी को घंटा
जानने का शौक होगा, बस अब चलेंगे गाइस। सो लास्ट एपिसोड में हुआ ये था कि डैंडेलाइन अपना पहले जो एक ब्रॉथल था उसको कन्वर्ट करके एक अच्छा खासा नया ब्रॉथल बना रहा है। आई मीन कैबरे कुछ नाम करके बना रहा है, मतलब होटल टाइप का। आई मीन जहाँ पे एंटरटेनमेंट होता है, ब्रॉथल ही कह लो, तो वही बना रहा है। सो वहाँ पे हम लोग को कुछ सामान वामान जुगाड़ करना था। तो डैंडेलाइन तो है ही हरामी, लड़की लोग का चक्कर में तो क्या ही करें। तो वो एक दोस्त उसका, व्हाट द हेल रोज, तुम यहाँ से नहीं कैसे जा पा रहा? उसका दोस्त के पास कुछ पेंटिंग्स का कार्ड या था या प्लेकार्ड्स कुछ था, वो हम लोग को लेने आना था। उसके लिए हम लोग यहाँ पे, रोज तुम कैसे नहीं निकल रहे हैं यहाँ से? क्या कोई दीवार है क्या यहाँ पे गायब? कुछ तो नहीं है? मजाक मत किया करो मेरे साथ, पूरा मूड खराब कर दिया एकदम। हाँ, तो प्लेकार्ड्स था, वो सब हम लोग को रिट्रीव करने के लिए आना था। उसका दोस्त किराया और डेप्थ में डूब चुका था, एकदम नशेड़ी। ओके, तो हम लोग उसके लिए रेस जीते और रेस जीतने के बाद उसका दिल भी जीते। सो हम लोग को प्लेकार्ड्स मिल गया, सब कुछ मिल गया। हम लोग को डैंडेलाइन से बस बात करना है कि सारा जुगाड़ हो चुका है, तुम अपना उद्घाटन चालू करो। और स्पेशल गेस्ट सोचिए कौन है? ड्रैगनस्टीन और गेराल्ट ऑफ रिविया। हम लोग उद्घाटन करेंगे उसका नया नाब घोड़ा। चुप रहे, तेरे से बढ़िया आया है, तुमसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी है मेरा रोच। ओके राइट रोच? बिलीव। अब हम लोग चलते हैं डैंडेलाइन से बात करते हैं कि सारा सामान आ चुका है डैंडेलाइन, तो अब तुम उद्घाटन कर सकता है। बिलीव ने, बस अब कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हम लोग को सीरी को ढूंढने के लिए स्केली का जाना है, उसके लिए हम लोग को बोट पकड़ना होगा। लेकिन अभी हम वेलन में जितना भी काम है सब निपटा ले, दोस्त से मिल ले, पार्टी कर ले, उसके बाद स्केलिगा में जाकर के हम लोग को पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ेगा। सो बिलीव मी, स्केलिगा में वाइकिंग्स रहता है, वहां पे पता नहीं गेरोल्ड का दोस्त लोग है कि नहीं, बट आई डोंट नो। स्केलिगा आइलैंड्स काफी दूर है, समंदर के थ्रू जाना होगा हम लोग को। सो इट्स अ बिट। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? इतना सारा आदमी लोग बारिश में बाहर क्यों खड़ा है? कम ऑन गाइस, अंदर चले जाओ, भीगो मत यार बाहर। ये रेडेनियल सब ना घुसने नहीं दे रहा शहर में वो लोग को। ये देखो, चेकिंग लगा के रखा हुआ है। अब क्या ही कहेंगे ये लोग को। लेट्स रीच डैंडेलाइन, पक्का बिलीव में अब पार्टी होने वाला। ओके, मेरे पास पार्टी का सामान भी है मेरे लिए, बट कोई नब तो यहाँ पे बैठ के रोटी खाता है, उसके पास पार्टी का सामान नहीं होता। ग्लोरी लेन। अबे यार मत बोलो, अभी भी कुछ। ओके, ये चालू हो चुका है। रोज तुम रास्ता पे क्यों रुक जाता है? आगे चलो यार, तुम उधर जा, इधर जाओ। ओके, कैबरे, ये कोई घटिया जगह नहीं है, ये अच्छा एस्टेब्लिशमेंट है। हमको अपना प्रोफेशनल काम कर लेने दो पहले। हम यहाँ पे नाचना हमको बहुत पसंद है, बट ये लोग आज अच्छा म्यूजिक नहीं बजा रहा। अच्छा म्यूजिक बजाओ। डरता क्यों? नहीं मारेंगे, हम जा रहे हैं अंदर। ये लोग फिर से लड़ने लगा। ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या ही कह सकते हैं, राइट गेरोल्ड? ये लोग फिर से लड़ाई कर रहा है कोई बात पे। Well, see the crew's been hard at work. Not bad. No, not all. But I'd imagine something more, more theatrical. Yeah. But I thought a boudoir would be right in line with your tastes. Oh, you chose it. Well, I'm not saying it's bad, just different. Not exactly what I'd envisioned. मत बोल ऐसे, now that I think about it, you're absolutely right. A boudoir's the perfect setting for a cabaret. What about Rotlick? Did you get the placards? Rotlick said he'd bring them on his own. Should be here soon. लड़के के लिए कितना झूठ बोलता है? Best way I can think of to promote the chameleon. हाँ? Let me work on. हम यहाँ पे फूड रिव्यू नहीं करते, हम लोग कोरियोग्राफी कौन कर रहा? Prepared anything special for the opening? We haven't, but Polly has. यहाँ पे हम लोग सलमान खान को बुला के नचवाते हैं, मजा आएगा ओपनिंग सेरेमनी के लिए।
premiere will have the audience on their feet, on their knees, both at the same time. It's not the rosemary and the thyme. हमको लगा rhyme है. Thyme हो गया. Never mentioned wanting to change the name. Rosemary and thyme wasn't all bad, but it conjured images of Temerian cuisine served by waitresses in peasant garb. Chameleon's a lot better for a cabaret, apart from which it emphasizes that the place has undergone a transformation. Just a better ring to it all round. I get it, Dandelion. Trust me, I get it. When is the grand opening? हमको कब आना है? हम उद्घाटन करेंगे. Soon. We start our dress rehearsal in an hour. I just need to nip back home for my dress. Okay, Priscilla, निकलो यहाँ से. Priscilla पे लाइन नहीं मारना. Dandelion की गर्लफ्रेंड है. Thanks for everything. Don't mention it. अरे कोई बात नहीं, Dandelion. तुम्हारे लिए तो हम लोग Seems my जान cabaret भी दे dreams are देंगे. about to come true. So, around to celebrate? I'm buying. वाह, आज ये पहले बार अपना पैसा खर्चा कर रहा है. Glad it. Why not? That's Let's not a- drink. Let's drink to roti The eater. foreman mentioned Just he chat saw में. you and Priscilla talking, He's all right. and she say anything about me? Oh. हम क्यों बताएं? हम नहीं बताएंगे. ये क्यों? She said you're fat and you smell. She praised your rationality. Don't remember. Why do you ask? Rationality. सलाद भी खा रहा. क्यों? इसमें हमको वो मिल गया. Listen, what the hell? ये सलाद का नाम लेकर के मेरा टेस्ट बिगाड़ दिया एकदम. She praised your rationality, Daniel. She said something that made me think she's not entirely normal. What? That you're responsible. got यहाँ your पे feet लव planted मोमेंट होने firmly on लग the गया. ground. इसको पता करना है Pulling प्रिसिला my इसके leg. बारे में क्या सोचती है. Not this time. लगता है इसको प्यार हो गया है जिंदगी में पहली बार. भले ही अब 1000 One लड़के thing's फंसाया leaving बट me. एक से तो प्यार होगा ही. How do you manage to get the loan from Sophronia? Wasn't easy. She got so excited about our performance, I had to read to her for 4 hours. 4 hours from the cloak and the dagger. You kidding me? You mean you didn't? Are you crazy? Who do you think I am? हमको भी लगा ये कुछ उसके साथ घटिया हरकत करेगा तभी वो मानी होगी लोन देने के लिए. She's late, of course. She knew how important this night was to me. क्या वो कौन नहीं आया? Probably just making herself gorgeous. Takes time. So it's true. A woman's vanity knows no bounds. Master Dandelion! प्रिसिला कहाँ गई? She's क्या शीज? What? Speak, man. badly been attacked. What? They took her to Valmerius Hospital. Attacked? She's hurt? Geralt, क्या हो गया come ये? with me, please. Of course. Let's go. Let's fucking go. प्रिसिला को कौन अटैक किया? यार, Gods. Priscilla, अबे उसका चेहरा. is she gonna live? I'd say that's certain. Her condition's critical but stable. What Beg your the pardon, but hell? you are a relative? Relative? No, a friend. A very close friend. Dandelion, correct? She uttered the name in her few moments of lucidity. I am Joachim von Gratz, head of surgery. Until recently, a lecturer at Oxenfurt Academy. Enough of the courtesies. What are her injuries, besides her eye? A concussion, cranial swelling, incision into her larynx, and scalding inside the throat and esophagus. Clearly someone forced her to imbibe a caustic fluid. What the fuck? ऐसा कौन अटैक किया इस पे? I mean, what? What's a बोला? एक second. A second, please. इसको Who मालूम could है? have done this? That I do not know. I do, however, know she is not the perpetrator's first victim. मतलब ऐसा Okay, I know अटैक that. पहले भी हो चुका है. I've seen wounds like this. They're not the kind one would forget, don't you agree? In fact, just this week, a corpse turned up in the morgue with similar injuries. And no heart.
No harm? Man, क्या You mean that might have happened to Priscilla? Is someone looking into this? दिल निकाल लेता है? This is Novigrad. Only the innocent burn here. Geralt, I know I owe you 100 times over, but I need to ask you another favor. Find the bastard who did this. Of course I will. Find him and kill him. Don't need any convincing. Come on, Dandelion. Let's think about what we can do. I would suggest examining the previous victim's corpse. It has yet to be autopsied. Doing so could very well provide some clues. Man. No need to look astonished, gentlemen. As a surgeon, I know the importance of preventive medicine. Rather than wait for this maniac to strike again, I'd prefer to excise him. Not unlike a tumor. कोई बहुत घटिया सीरियल किलर लूज है इस सिटी में. I mean, प्रिसिला को क्या डैमेज किया, वो पूरा चेहरा ही बिगाड़ दिया उसका. और कोई एसिड पिलाया है उसको जिससे उसका गला जल गया. किडिंग मी? और ये डॉक्टर मेरा इतना हेल्प करना चाह रहा है. I mean, ये भी नहीं चाहेगा कि किसी के साथ ऐसा हो. I mean, वो सिर्फ लड़की लोग को ऐसा मारता है क्या? Great analogy, but this tumor's not gonna sit there, wait to be excised. Appreciate the help, but I doubt you know what you're getting yourself into. वही तो. I know perfectly well. I'm a Witcher professional monster slayer. हमको कोई दिक्कत नहीं है, but ये Easy assurance to make, harder to back up, especially if you've spent your whole life wielding a scalpel, not a sword. Look at this scar. Don't be shy. Any Oh. idea what leaves such a mark? A flail. Morning star, maybe. What do you think? A blow sustained at the operating table? No? Let me repeat. I know what I'm doing, and I wish to help. Okay, हमको लगता है ये वॉर वेटरन है. I mean, वेटरन सोल्जर है. I guess ये हम लोग का मदद करना चाहता है. प्रिसिला का जो भी उसको ये घटिया चीज किया है उसको ढूंढने में. Think they'll let me into the morgue? By the main entrance, certainly not. But you can also get inside through the sewers. The sewers. Travel them often, Doctor? As often as required for the pursuit of preventive medicine. Alternative treatments. Aggressive ones, I'm guessing. Interesting. We can discuss this en route. Are you ready? Let's go. Ready and intrigued. I'll get whoever did this, Dandelion. Even if it's Hierarch Hemmelfart himself. Thanks. This really got intense. I mean, You lead. ओके तो ये sewers है. So, preventive medicine you practice in the sewers. What's that about? Think. Sewing up drowner victims can grow awfully tedious. Is it not better to nip the problem in the bud? I tried to get the temple guard to enter the sewers, alas, to no पक्का avail. आशुतोष का काम है. So I took matters into my own hands. कौन है ये? No charge. नबड़े. You damned पता नहीं idealist. Ruining the किसका market किसका for us. नाम लेते रहता है. बट नाम से तो लग रहा है काफी अच्छा इंसान होगा. उसका काम नहीं हो सकता. हम वो बता रहे एक नमत राठौड़ कर सकता है ये. Believe me. Let's see. हम लोग सीवर्स तो आ चुके हैं. Let's find that bastard who did this, okay? Oh, Hear that? Been hearing it for a while. Draw your weapon. drowners. काफी सामने है वो लोग. Let me see. Okay, ये क्रॉसबो लेकर के आया है. बहुत बढ़िया. साले गधे. ड्राउनर है कहाँ? Fuck. हम इतना घटिया कब से हो सकते हैं? Come on, attack me, bastard. Let me get this clear. हमको एरिया चाहिए लड़ने के लिए. यहाँ पर भी और यहाँ पर भी. Man, oh man. Lol. Nah, Namat is a great human. You don't know him yet, okay?
ugly bastard. What the heck? You kidding me? देख लो तुम तो आ गए यार इसमें इतना जल्दी वो भी. No, you gotta be kidding me. You gotta be kidding me. ये इतना जल्दी हमको डैमेज दिया कैसे? Come on, let him burn. अबे ये जल क्यों नहीं? ये कीचड़ उठा के फेंक रहा मेरे पे. नहीं. हमको हेल्थ रीजनरेट करने के लिए टाइम चाहिए. Come on. No. हम गार्ड डाउन कर रहे हैं काफी. Oh shit. Wait, एक और राउंडर है वहां पे. हमको हेल्थ रीजनरेट करना होगा यार. I mean, ऐसा चलते रहा तो अब हमको फुल पावर पे आना होगा बिलीव में. Let's go. Let's fucking go. ओके फुल पावर पे क्या हम मजाक ही कर रहे हैं. हम नेक्रोफेज ऑयल लगा ही नहीं तलवार पे. नेक्रोफेज ऑयल अब ये लोग अब पत्ता की तरह कटेगा. बिलीव में. They can't even land a hit on me. Fuck off. Lost it. I kill one, another takes its place. I know how you feel, believe me. मेरा स्क्रीन डैमेज ना हो गया हो इसके वजह से. Where to now? That was not a tough fight, believe me. Priscilla, how's it look? Give it to me straight, no sugarcoating. Her wounds will heal, but it's her voice that Gosh, concerns me. doctor. Surely you understand what a terrible हमको लगा उसका blow आँख ही निकाल लिया है. vertebrates. Enough to strip her of the will to live. Any remedy for that? I fear only your friend Dandelion can be of help on that count. I mean, Dandelion उसका आशिक है तो सो वही मदद. ये बोल रहे प्रिसिला गाना गाती थी और उसको एसिड पिलाया था ना, तो वो अब गाना नहीं गा सकती अगर ऐसा उसका गला हील नहीं हुआ तो. I mean, हमको लगा था वो बच नहीं पाएगी. I mean, उसको वुंड्स कैसा दिया था. उसका लिटरली आंख पे डैमेज था, लिप्स भी डैमेज था. कौन कमीना ऐसा कर सकता है? हमको ये क्यों ह्यूमन का काम लग रहा है? क्योंकि कोई मॉन्स्टर ऐसा अब्यूज नहीं करता होगा. Why? Got somewhere to be? Someone might disturb us. The coroner, for example. Or Reverend Nathaniel Pastodi. Very well. We seek the corpse of a dwarven woodcarver. Dwarven wood cobbler? Let's see. I mean, हमको क्या ही कहें. यहाँ पे हम लोग छुप के आए हुए हैं. यहाँ पे लाश पड़ा हुआ है. जो भी शहर में इधर उधर मर के पड़ा हुआ रहता है आदमी लोग, वो लोग का लाश यहीं पे ऑटोप्सी के लिए आता है. ये विच हंटर का लाश है. Looks like necrophage has got to this one. तो यहाँ पे हम लोग चोरी छुपे घुसे हैं, कोई देख ना ले हम लोग को. ये किसका है? Human, wrong body type. ओके ड्वार्फ का लाश ढूंढ रहे हैं ना हम लोग. वो अंदर होगा. ड्वार्फ तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे. ये कौन है? This isn't it. Let's keep looking. Let's keep this. हट जा प्रोफेसर. Of course. Yes. यहाँ पे लाश नहीं दिख रहा हमको ड्वार्फ का कोई भी. पर यहाँ पे माल जरूर दिख रहा है, तो कुछ उठा ले हम पोशन के लिए इंग्रेडिएंट्स यहाँ से भी. ये ऑफ कोर्स हॉस्पिटल ही है तो दिस विल डेफिनेटली हेल्प मी. बट यहाँ पे कुछ है. ओके यहाँ पे लग रहा. बट ये क्या है? अच्छा खासा डायग्राम है पूरा ह्यूमन बॉडी का. बट ये तो Calluses on the fingers, God. sawdust in the beard, clothes sticky with sap. Must be our dwarf. Excellent. I trust you don't grow weak in the knees at the sight of पगला है क्या? In a गेरोल्ट bit. नहीं. Start the autopsy. Where? हेड. Let's look at his head. Hair smells like it's burnt, like he was in a fire. Notice anything उसका else? आंख निकाला हुआ है. That his eyes have been scooped out, for instance? Those burn marks I see in his eye sockets. Yes. And some grey dust. Ash, it seems. Very fine. Murderer gouged out his eyes, then put burning coals in the sockets. क्या? So it seems.
Looking at the wounds, it appears our woodcarver was still alive when it happened. What the hell? आंख निकाल करके उसके अंदर जलता हुआ कोयला डाल दिया आई सॉकेट्स में. What the fuck? What? Let's examine. कौन हैवान है भैया? Burns, blisters. Just like Priscilla. लिप्स भी जला हुआ है. प्रिसिला का जैसे जला हुआ था. लैरिंक्स? See this? Incision made into the voice box. Indeed, so thin as to be nearly unnoticeable. A small, extremely sharp instrument. Scalpel. But why? The wound is too small to bleed, and there are signs of swelling. The murderer... I believe he performed a tracheotomy, so the victim wouldn't die too soon. You gotta be kidding me. ये हैवान का भी बाप है रे. ये पूरा टॉर्चर करता है. वो ऐसा चीज देता है कि जब तक वो टॉर्चर पूरा नहीं कर ले आदमी मरेगा ही नहीं. और जब वो What? किया इसको तो ढूंढना पड़ेगा. ये पता करना पड़ेगा ये क्या है. अब ये हमको इंसान भी नहीं लग रहा. हमको पक्का कोई, लेकिन कौन सा मॉन्स्टर के पास इतना दिमाग होगा कि वो ऐसा करेगा. Let's examine his torso. What have we here? Deep wound on the left side of his rib cage, and a scar the length of his stomach. I am back. बहुत बढ़िया. Glad you are back, idiot. आज तो literally रीच खत्म है एकदम स्ट्रीम का हमको लगता है. कल तो बढ़िया भी था. आज तो बर्बाद है. लेकिन यहाँ पे इंटेंसिटी चल रहा है एकदम. कोई बहुत ही हैवान टॉर्चरर यहाँ पे निकला हुआ है. किलिंग स्प्री पे शहर में. Look at the scar. Wounds long and thin, an incision, but the edges are ragged. Means nothing. Look, no swelling, no bruises. An old injury, perhaps an accident in the workplace. Chest wound. Let's examine the chest wound. इसका आंख तो निकाल लिया है लेकिन Carved out, wound Whoa. cauterized. Wait a minute, there's something else. वाओ. ये ऐसे ही खाली हाथ उसका बॉडी किया. ये क्या है? Egg from an amphibian. A salamander? Scorched but intact. I attended some lectures in herpetology as a student. Afraid I don't recall any amphibians that would lay eggs in corpses. So either Professor Cochrane was deeply mistaken, or this is our murderer's doing. ये कितना गंदा टॉर्चर. व्हाट? ये दिल निकालने के बाद उसमें अंडा डालता है एम्फीबियंस का. क्या कर रहा है? Open the abdominal cavity. इसको तो अलग ही वो लग रहा है. Of rot. Once fought a zoogle up to my waist in sewage, so I doubt. Wait. Smells not rot. Formaldehyde. A medical novelty. Heavily diluted, it's remarkable at preserving organic tissue. In stronger proportions, it's more destructive than acid. Explains why there's no smell of decay, and why his throat's scalded. Man oh man. ये फक्कर तो गजब का His जेनेटिक. genitals. We ought to inspect those. I sincerely doubt they bear any relation to the matter. We'll see. We'll see. Pull down his trousers and... shit. क्या Syphilis, actually. Early stages. No sign of diffusion. क्या? Could be a connection. Only as the killer's potential motivation. What the fuck? What is this? एक कीड़ा आके बैठ गया मेरे पर. Get the hell out of here. लोल. ओके क्या ओके क्या कर रहा? ओके इसका Look हाथ at his एग्जामिन hands. करते हैं हम लोग. These welts. Rope burns, right? He was tied up. इसका expect आंख so. निकाल लिया. इसका No one दिल could sit निकाल through लिया. such आंख निकालने के torture बाद unless जलता हुआ now- कोयला इसका आंख में डाल Speaking दिया. from experience. हैवान है वो. Yes, that of a victim. Spent a year in the dungeons of Tretogor. ये क्या क्या किया हुआ है ये डॉक्टर? Some other डंजन में time, है, maybe. सोल्जर भी है, डॉक्टर भी See है. the callus? Our dwarf wore a ring, but someone took it off him.
See anything interesting on his legs? Genitals His देखे तो right foot. The ankle swollen, toenails broken. He clearly kicked something very hard. Right before he kicked the bucket. ऐसे क्या मजाक उड़ा रहा है Doesn't यार? strike me as the right time for jokes. वही तो Apologies. We surgeons, we've a different sensibility. सेंसिबिलिटी नहीं यार. And a different sense of humor. जेनिटल्स तेरे को फिर से देखना, ये देख His जेनिटल्स. genitals. We ought to inspect those. I see. You clearly find gonads fascinating. I fear I don't share your passion. Let's focus on other parts of his anatomy, shall we? Oh भाई. Geralt Gany, neither am I. ये एक आदमी चैट में बोल रहा था जेनिटल्स. सो हम लोग उस वजह से किए थे, okay? All right, we know it All now. right. Think I know enough. Enlighten me, please, because I've still no notion what this is about. What the motive What? might have हमको been. लगा ये समझ गया. Okay, हम लोग को समझाना है इसको. This was a ritual murder. This was a punishment. No motive. Murderers mad. Rather not share my conclusion. हमको लग रहा है मर्डरर पागल है, लिटरली पागल है, क्योंकि कोई रिचुअल भी हो सकता है, लेकिन वो क्या चीज का अंडा, छिपकली का अंडा उसका दिल का जगह पे डाला था ना, और आंख निकाल रहा है, जलता हुआ कोयला डाल रहा है, जीभ जला रहा है, लिप्स जला रहा है. रिचुअल हो सकता है. It's some kind of sick ritual. You saw it. Burns in the eye sockets, cavity where the heart should be, scalding liquid, all centering on warmth, heat, fire. Eternal fire. A fire eternal. वही है. It's a lead worth following. Fucking Any eternal idea fire, what his name हरामखोर. was? Fabian Meyer. अरे And I'm हम लोग- Hubert Reich, the coroner. I've come to perform the autopsy, but I see you've done it for me. ये कौन है बे? As always, you interfere where you're neither needed nor wanted, drag others into trouble in the process. Who is this? I'm Geralt of Rivia. Lifelong learner. Got a What? couple questions Geralt. for you. Very well, speak. But be quick. Reverend Nathaniel has come by for an inspection. He'll be here shortly. रेवरेंड नथानियल कौन है? पता नहीं कौन है, बट ये तो आदमी ठीक लग रहा है. ये हम लोग को कुछ बोला नहीं, जबकि हम लोग चोरी छुपे घुसे हुए हैं यहाँ पे. So You old friends? Hubert taught me the rudiments of medicine long ago. And not ये very तुमको well. सिखाया? ये तेरे You've टीचर है? still not mastered certain ये तो basic young है. principles. For example, that a doctor's role is to treat the ill, not save the world. ये बुढ़ा को ये कैसे सिखाया? Not changed a bit. A compliment? No, a statement of fact. 30 years, and you've not changed a bit. 30 साल? ये जवान कैसे 30 साल से? Woodcarver's body. Where was it found? It's important. Plan to investigate? Exciting. He died in his workshop south of the market square, just beside the gate to Far Corners. That poor Trebirates was attacked there. City's abuzz about it. But the woodcarver, Eustace, the corpse collector, brought us the body. You should speak to him. Saw him just around the corner near... Oh, greetings, your reverence. और Who are these ये people? I believe I made it clear no one's to be allowed in under any ये तो देख के ही लग रहा है ना, इसका चेहरा पे You लपड़ did, मारने का but मन कर रहा है. They're friends of the deceased. Here to collect the body. ये इटर्नल फायर का वो है. Show them out at once. देखा ना, देख कैसे बोल As रहा your है. reverence wishes. Gentlemen, follow me. You shall leave via another route. ओके, चलो. Why do you cover for us? I was covering my own arse. If Reverend Nathaniel had learned someone had entered the morgue, then cut open a corpse without his permission, I'd be in deep trouble. But you didn't give that a thought, did you, Joachim? As ever. चलो बचा तो लिया While I तुम. don't approve of your willfulness, I also wish to see this murder. Wait, don't tell me he using people's body to remain young. Related to this case? I पता नहीं, आगे जाकर के ही पता चलेगा. Thank you. Let's see. वो आदमी काफी जवान था और उसका स्टूडेंट बुढ़ा. हमको शक तो उस पे जा रहा है, बट कुछ भी हो सकता है. नथानियल, इसका टीचर कौन है ये? Nathaniel. Who is he? A scoundrel, a rogue, like every man who wears the robes of the eternal fire. नहीं, Most ये are नथानियल वो scoundrels दूसरा before they आदमी put है on जो the उसका robes. बॉस था, उसके बारे में बात True कर in रहे his हैं अभी. case as well. Before he donned the frock, Nathaniel was a torturer, delighted especially in torturing women. What? Torturing Later, women? Hierarch Hemmelfart appointed him to oversee the morgue. He deals with the temple guard, supervises cremations, conducts funeral masses in the temple on the Isle, and so forth. Dream job.
साले को सही में ड्रीम जॉब, ये वो नहीं, उसका टीचर नहीं, जो दूसरा बॉस आया था ना, उसका नाम है नथानियल, वो इटर्नल फायर का प्रीस्ट। वो साला पहले लड़की लोग को अब्यूज करता था और अभी उसको ये जॉब मिला है कि मरा हुआ आदमी लोग का लाश जलाने का, प्रिजनर सबको देख रेख करने का, तो मतलब अभी भी वो आराम से अब्यूज कर ही सकता है। इसी वजह से गेरोल्ड बोला ड्रीम जॉब मिल गया साले को। बट इसका टीचर के बारे में हमको नहीं मालूम है। वही तो, could have told me about the coroner. Might have told me you know the coroner. We could have skipped the trip through the वही तो, sewers. तेरा टीचर था I तो know बताया him, क्यों नहीं? Thus I avoid him. I've said enough on the subject. हमको लगता है इसको भी शक है उस पे। Won't press you, तुमको जितना Don't aim पता। to press you. Thank you. I've nothing to hide. It's just an old wound, unhealed as yet. कोई बात नहीं। What will you do now? Plenty of leads. Woodcarver's workshop, the corpse collector who found him, alley where Priscilla was attacked. Got work to do. ये क्या बैठा हुआ है कोना में? At the hospital. I must return there. But I shall keep my fingers crossed. And I'll keep my eye on you. Let's see. Shut off! अबे तेरे को कुछ बोले, सॉर्ट ऑफ करने लगा तुम अचानक से आके, हैं? Bloody bum! थूकता है मेरे ऊपर। साले मेरे ऊपर मत। Carnal sins. Investigate the alley where Priscilla was attacked during your Witcher senses. Examine the place where the wood carver died using your Witcher senses. Find Eustace the corpse collector. सबसे पहले Priscilla, wait, सबसे पहले ये क्या है? Arms for the poor. Okay, Eustace the corpse collector यहाँ पे। Out in the streets no more. At least before they didn't used to kill women. Fall afoul of the king of beggars, and you get no mercy no matter who you Others are. won't hassle you, Richard. यहाँ पे किसको मारा है ये लोग? Mary's not you. औरत मरा हुआ है, एक आदमी मरा हुआ है। और ये यूस्टेस यही है ना? ये रहा। You Eustace, the corpse collector? Aye? How'd you know? Fourth sense, I think it is. You bring Fabian Meyer's body to the morgue. Fabian. Oh, yeah, I remember. No ice, no art, one of them, right? No purse neither, as I recall. पर्स? पर्स का क्या करेगा? One of them? So there have been other bodies like that? Sure have. Beggars, street urchins, and street walkers. One went so portly, I had to cut her into pieces to fit her in me wheelbarrow. Slippery sow, they called her, on account of her. Some things are best left unsaid. What happened to the pieces? What do you mean? Reverend Nathaniel ordered them burned. Every last one. Oh, shame that was. Shame? Why? Actually, never mind. Another thing that's best left unsaid. You searched him? You search Fabian's body? Well, I cast an eye in his pockets. Made sure nothing went to waste. I call a spade a spade. You rob corpses. And I call a prick. It's none of your fucking concern. What, you tax collector? Piss off, mute. Hey! What? Kidding me? You challenging me? Ah. I'll advise you not to piss me off, या फिर इसको exy the fuck off करते हैं हम लोग. Exy the fuck Talk. off. What did you find on him? I as you wish. What? Triflings, baubles, gloss-beaded ring, handful of coins, and a letter. Look, vellum, quality parchment that. I'll wipe off the writing and sell it as new. That's human skin. Huh? Priscilla. Next victim's name. If you'd given this to the right person, she might not have been hurt. What the fuck do I care what happens to some Priscilla? Huh? Short of wenches in this town. ये हमको एक लेटर दिखाया जिसपे जो लेटर नहीं था एक्चुअली, इंसान का स्किन था और उस पे लिखा हुआ था प्रिसिला का नाम, मतलब उसका नेक्स्ट विक्टिम। और ये साला सब सामान अपने पास रखता है जब ये कॉर्प्स को पहुंचाता है। सो ये गधा अगर दे दिया होता किसी को वो चीज तो प्रिसिला पे अटैक बच सकता था, बट ये किसी को नहीं बताया। Oi, fucking hell! What was that for? For everything. Lay the fuck down over there, idiot.
Shoulder off. Don't know nothing else. और यहाँ क्या हो गया? Gods! What happened here? Monsters must have run down. There's swarms in the city now. Let's stay home. That sort of talk, you know. By your door, by your windows. These bandits dropped them. Plain as that. Help! Save me! I'm dying! I'm on fire. प्रिसिला जहाँ पे अटैक हुई थी वो एली हम लोग को इन्वेस्टिगेट करना, राइट? प्रिसिला वाज अटैक्ड, राइट? प्रिसिला पे अटैक कहाँ पे हुआ था? यहाँ पे? Got a problem. Hey, handsome. विस्लिंग विंडी? ये क्या कर रही है यहाँ पे? A brazier. This time of year? Grab him! Sis. That him. How am I to know? Watch him, see what he does. क्या हुआ ये? Son of a whore. Now left! Left! ये लोग मेरे को क्यों अटैक कर रहा है? और ये विस्लिंग विंडी? क्या मजाक है ये? हमको क्यों अटैक कर रहा भाई तुम लोग? हम इन्वेस्टिगेट करने आए हुए हैं। Fucking kidding with me? ये पागल हो गया क्या अचानक से ये लोग? या तो ये लोग किलर का सपोर्टर सब है। ये बचाना चाहता है उसको साले को। Let's take them down. What the fuck? Come on, bastards! अब हम तुमको fucking full power दिखाते हैं। Come on, you fucking come on, bitch! एक तो झूठ मूठ का अटैक किया हुआ ये लोग। That's it, you're in for it! इतना शांति लग रहा है ना ये क्वेस्ट में, पता नहीं क्यों अजीब लग रहा हमको। Gotta get around him! Is he? Kill him! तुम हमको अटैक क्यों किया था हैं? Slaughter the freak! Not too late to surrender. Think you'll get me too, huh? Up your ass, deviant! Hoes can fight back! Calm down, I'm not gonna hurt you. What are you doing here? Getting vengeance. Well, why are you staring? Have you not heard killers always return to the scene of their crime? Me and my brothers are waiting here to give him a warm welcome. For Priscilla. Almost did her in, the whole son. I know. Here to look for clues and find anyone who might know something. ये whistling windy को तो हम जान। But I can tell you what I know. ये क्या मजाक है ये? पहले तुम मेरे को अटैक करवाओ, हम किलर थोड़ी ना थे। किसी को भी अटैक करवा देती है, बट इसका डर सही है। वो मार ही ऐसा रहा है, खतरनाक मार रहा है एकदम। Priscilla wasn't the sole victim. You aware of that? Oh, dearie. Of course I was. This didn't start yesterday. Others have died like this before. Beggars, street girls, orphans. But who'd have a drama concern about them? Human rubbish. It's what the guards call us. Recall any names? They didn't have proper ones. Baldy, curly, buns. That's what folk called them. No friends, no families. Their bodies were burned long ago. So ये victim I mean, wait a second. जो भी ये मर्डरर है वो ऐसा आदमी लोग को ज्यादातर मारता है जिसका फैमिली फ्रेंड्स नहीं है, क्योंकि रॉयल पे अटैक करेगा तो ज्यादा नोटिस में आएगा ये प्रिसिला के दोस्त Priscilla friends? Friends?
Nah. But she saw more than a stupid whore in me. Treated me with respect. It mattered. I was looking to give up whoring. Pick up a decent trade. But none would take me. Not as a washerwoman, nor a servant, nor a cook. Felt like a leper, I did. But Priscilla, she was different. Agreed to put me in her play, you see. Lots of the other actors, they were afraid on account of her jesting about the eternal fire. Whistling Wendy on stage, can you imagine it? Our dream's gone now. I'm back to working street corners. Sorry to hear that. You could do worse as work goes. Or so I tell myself. Man, this is not good. Take care now. I gotta look around some more. Appreciate it if you didn't disturb me. Naturally, we'll stand aside, behave. But do tell us if you find anything else here. Sure, I will. Oh, the head's ringing. What do you want? माफ करना दोस्तों. I guess ये लोग अटैक किया मेरे ऊपर, बट ये लोग का कंसर्न था. इसको लगा कि किलर है हम. I mean, किलर यहीं पे अटैक किया था प्रिसिला को. ये एली में प्रिसिला कर क्या रही थी? But I guess वो उसको दौड़ाया होगा या फिर कुछ. A brazier. This time of year? Brazier? Man's footprint. The murderer's maybe. Weight on his heel. Took a step back. Human. Priscilla's. प्रिसिला का खून है यहाँ पे. सी आगे क्या होता है? Concerned citizens ceremony. Remember, good people, the light cast by the eternal fire dispels every darkness, reveals each lie, exposes every unworthy and debauched soul. Not even the shape-shifting jobless can hide from its light, not even the witches and the sorcerers, so adept at fooling the common folk, not the loose women who walk the street and fog men's minds with their charms. Abandon them, treacherous and immoral magic arcane. Cover your bodies in modesty and provoke no unclear thought, and the eternal fire will expose for you all monsters and sinners, or else burn you too in its flame concern. क्या हो रहा है? आपको कुछ समझ नहीं आ रहा? कोई कंसर्न सिटीजन का लेटर लिखा हुआ है यहाँ पे, और उसमें इटर्नल फायर के बारे में प्रेज लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है कि जो औरत लोग रोड पे घूमती है, जो इटर्नल फायर को पसंद नहीं करता, फोर्स और इटर्नल फायर का नॉन बिलीवर्स को अटैक करता शायद ये. I guess. This is different. ये अब ह्यूमन लग रहा हमको ज्यादा. Fled before the guards arrived. Ran this way. फिर इधर भागा वो, और फिर अब क्या? अभी हम बोले ये ह्यूमन लग रहा था, बट अब ये ह्यूमन नहीं लग रहा हमको. The fucking hell. कुछ ज्यादा ही ऊंचा दीवार है. ये गेरोल्ट भी अच्छा से नहीं कूद पाएगा जल्दी. Trail ends here. Strange. Even I couldn't jump this wall. वही तो. You gotta be kidding me. ट्रेल यहीं खत्म हो गया. कुछ खास मिला नहीं हम लोग को. बट ये क्या है? A brazier. This time of year? ब्रेजियर क्या होता है? कोई स्मेल है ये? Let's see. ये whistling wendy को कुछ. So, what is it? Think I know what happened here. Priscilla fought back, her assailant retreated, and knocked over the brazier. Someone must have heard it. Maybe saw something, started hollering. Guards showed up. Murderer didn't finish the job, didn't cover his tracks. Just collected himself and leapt over the wall. Trail ends there. You divined all this from a pile of rubbish and a few prints in the mud. Do that practically every day in my profession. And practice makes perfect. True enough. Just like I can tell right off if a punt'll pay or try to wriggle out of it. That particular skill I could use myself. Well, I guess हम लोग को पता चल चुका है क्या हुआ है यहाँ पे. Take care now. And I got a murderer to catch. A big one, that is. Believe me. Let's see what this guy got. I mean, इधर नहीं जाना हम लोग को. So your murderer. Oi, Witcher! Coroner wants to see you. Been another victim. Told me to say the main door will be open for you. You're to come as soon as you can.
Sure thing, God. ये कॉर्नर मेरा दोस्त बन चुका है अब. That's nice. I guess that's nice. ये मेरा दोस्त इतना जल्दी कैसे बन गया? उस पे हमको काफी शक जा रहा है उस पे. बट हमको ज्यादा शक वो नथानियल पे जा रहा है जो लड़की लोग को अब्यूज करता है. वो कमीना हुआ ना, उसका तो मरना पक्का है मेरे हाथ से. बट पहले ये ड्वार्फ का जगह पे इन्वेस्टिगेट कर ले हम. ये ड्वार्फ का घर है कहां पे? I mean, ये ड्वार्फ का घर हमको दिख नहीं रहा. यहीं कहीं से रास्ता होगा ड्वार्फ का घर का. ये रहा रास्ता. ड्वार्फ का घर का रास्ता यही है. Anyone home? Begun, or I'll sick me hounds on you. Molly, Striga, come! Relax. I'm here about Fabian Meyer, looking for his killer. That's altogether different. Sit, you stupid mutts, lie down. Morning. Slowly. ये उसका भाई है क्या, फेबियन मायर का? Charming as beasts go. You daft? Even I'm scared of them. A better barking dog than an evil man at your door. Got someone particular in mind? Sure as shite. Bugger who did Fabian in. As soon as they'd hauled his corpse off, I run to a mate who raises fighting dogs. Bought these 2 mutts. Cost me a chunk of change. But I sleep sound at least. कि तो ये कुत्ता खरीद के रखा है क्योंकि इसको अब डर लगा हुआ है कि इसका भाई जैसे या फिर इसका दोस्त था, पता नहीं फेबियन क्या था इसका, वो मरा बेचारा. उसका आंख निकाल के क्या किया उसके साथ वो मर्डरर. I gotta find this guy. ये कौन मर्डर करते जा रहा है स्ट्रीट पे? A witcher has arrived in town. Believe me, he's going out soon. So who might you be? The Stiff's brother. Gus is the name. We ran a workshop together. Meyer and Meyer. Meyer and Meyer? Fabian Meyer और अच्छा ये brother है उसका. Now, just Meyer. Name it. I'll be closing it down now. As soon as I find a buyer for this shack, I'll head on to Mahakam. Be near my family or what's left of it. So, what do you want to know? What can I tell you about Fabian? हम मर्डरर का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि कौन आखिर उसको मारा है. जितना भी क्लूज है, जितना भी चीज तुम देखा है, हमको सब पता. Your brother have any enemies? Anyone dislike him? Threaten him maybe? 'Twas Fabian who threatened this one last. Oh, you were a good dwarf, craftsman like no other. But he were an incorrigible whoremonger as well. Whenever we put a bit of coin aside, I'd say, let's buy some tools, quality timber. No, he grabbed the purse and head out whoring. What the hell? Took to following one in particular. He'd say, "'Tis all your fault, dirty bitch, human dish rag," and other obscenities. Don't rightly know what that was about. Maybe he was in love with her. Know where I can find her? This dish rag? City cemetery. She died a few days back, quietly in her sleep. Her pawn said a fever took her. So फेबियन मायर की एक लवर थी या फिर उससे प्यार करता था वो फीवर से मर गई तो वो तो हट ही जा रही है. Tell me what you know about the murder, in order, in detail. It was like this. Had some work in Oxenford, and I was coming home. Saw a plume of smoke rising over the city. Thought to myself, blast it, gonna miss him burn another hag. But the smoke wasn't coming from Hierarch Square. It was coming from here. See the soot stains? That's where they burned our sculptures. Folk gathered round the blaze and found Fabian here beside it. They'd already loaded him on the cart by the time I arrived. Talk to your neighbors. They see anything suspicious beforehand? Hear anything? Claimed not to. But even if they had, they'd not have helped. They know we could have folk give bleeding orphans in the street of White Birth so as not to stain their poor lanes. They care about some dwarf. I see. फेबियन मायर यहाँ पे मर गया और किसी को घंटा ना कुछ फर्क पड़ा. The world that it, I mean, the world as it is. बस आदमी लोग यहाँ पे देखने के लिए आया था क्या हुआ है. Let's see. Fine, we've talked enough. Need to look around. Be my guest. Just beware of the dogs. यहाँ पे हुआ क्या? Let me investigate a bit. So यहाँ फेबियन का खून गिरा हुआ है, I guess.
यहाँ पे सबसे पहले एक लेटर है। Fuck's sake. ये कंसर्न सिटीजन सेरेमन, ये हर जगह वो गिरा रहा है। मतलब मर्डरर सेम है, इटर्नल फायर का वर्शिपर है ये। I guess I'm right. Statues of the old gods. Nothing but women. Shapely ones. वही तो, ये स्टैचूज इतना शेपली बनाया हुआ है। ओल्ड गॉड्स मतलब भगवान का स्टैचू ये जलाने का कोशिश किया था। That's where Fabian lay when they found him. फेबियन यहाँ पे मरा हुआ था। Someone dragged something across the floor, or dragged it from one wall to the other, repeatedly. Wait, what? क्या चीज? यहाँ पे कुछ ड्रैग हुआ है, यहाँ पे फेबियन मरा था तो यहाँ पे खून गिरा हुआ है। अंदर क्या है? Mind if I go inside the workshop? I've not even peeked inside since they found Fabian. But I'll open it for you if you want. खोल। Let me see what this shit is. Formaldehyde. Doubt Fabian used it. Gotta be kidding me. यहाँ पे कुछ है? Eyes. Humanoid. Completely rotten. फेबियन का आंख निकाल के यहाँ पे रखा वो। Eyes. Humanoid. Completely rotten. ये क्या More है? blood stains, but not near enough to say he bled to death. Unless somebody got rid of the blood. Left a few stains behind. So उसका खून से मौत नहीं हुआ था या फिर हुआ था? Furniture got knocked over. This looks like it was kicked. हाँ, फेबियन का पैर हम एग्जामिन किए थे तो हम लोग को पता चला था कि वो किसी चीज को लात मारा था मरने से पहले। फर्नीचर ही होगा। कुछ खास नहीं दिखा। Already know what happened. Fabian was in the workshop. Murderer attacked him there. They struggled. Fabian was overpowered, then tortured. For a time. I needn't know the details. Truth be told, I haven't the stomach for him. When it was over, the murderer dragged Fabian to the courtyard, then made a pyre of sculptures, set them aflame. But why? Why do all that? To teach a lesson. To him, you, the whole city. Had a look at your sculptures. And? Lifelike, aren't they? Mm-hmm. The women especially. Never seen a bust that size on Melitele. Oh, aye. Fabian's handiwork. I told him, brother, tits like that would crush her back. Whittle him down. He said, nay, they'd sell better this way. Told me to shut me trap. And sell they did. Till one sermon at the temple. And the celebrating reverend said that whoso buys idols from the non-human Myers sins twofold, as a heretic and as a lecher. That was the end of that. ये इटर्नल फायर काफी हरामीगिरी कर रहा है यहाँ पे। We've talked enough. Won't learn anything else here. Take care. Take care, my friend. अब लगता है अब तो कुछ तो करना ही होगा। Investigation is almost complete. हम लोग को मालूम तो चल गया। Aye. Fine. We've talked. Won't learn anything else here. फेबियन यहाँ पे मरा था, but Nothing doing. Something reeks around here.
eternal fire, Father of all, hear my prayer. Grant my plea. Bring my husband back to health. He's a good man, honest, righteous, eternal fire. वो काफी नींद आ रहा है ये सब सुनने के बाद. Grant what I ask and I'll spare no offering. Deliver us from evil. Street covered in guts after that whiz man blew his kisses. Bullshit. Oh, you can all go suck a devil. Mug like that won't get you a copper. Gots to be elegant like me. Let's just get the hell out of here. Believe me. अब हमको literally समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे हुआ क्या. Nothing hurts as much as life. हम कुछ सोच रहे हैं. No bread, no coin, poor as shite. What streets respect, Witcher? Is it true peasants gotta carve his cows himself nowadays? Oi, Grey How many Knight. times will you ask me if the colours are fine, Novigrad? Does it suit you? Welcome, Master Witcher. Another drifter in from Temeria. Why so glum? The old hag holding out on you? I don't know you. Go away. Nice. This is getting fucked, trust me. Daddy will get mad if he sees me talking to you. Why are your eyes so strange? Let me take a bit of rest. Believe me. You must sweat like a swine in that jacket. You are an offence to the majesty of the eternal fire. Those hunters would burn a rainbow if they could. Welcome, Master Witcher. Bloody bum. Dragged it to the guard hole. हाँ हमको नींद आ रहा है बिलीव में. बट ये कौन सा जगह है? यहाँ से हम आए थे क्या? आए थे यहीं से. हाँ यहीं से आए थे हम. क्यों लग रहा है हमको स्ट्रीम बंद कर देना चाहिए बिलीव. हम लगता हम कल कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आज एक तो रिलीज गिरा हुआ है शायद
और दूसरा बात ये है समझ में नहीं आ रहा क्या करें। मेरा पूरा एनर्जी लो है। बिलीव में हमको नींद आ रहा है। Should I investigate? पता नहीं चल रहा। Should I end the stream? ट्रस्ट मी हमको नींद आने लग गया। आई फील अ बिट स्लीपी। आई डोंट नो व्हाई। ऐसे भी अभी कोई स्ट्रीम देख नहीं रहा। हम बंद कर दें या फिर खुला रखें? फक इट, खुला ही रखते हैं क्या? लेट मी सी। 1 घंटा 7 मिनट का स्ट्रीम हुआ है ना? मैन, क्या हम आगे। वेट अ सेकंड, अभी 1 घंटा और कर सकते हैं स्ट्रीम आगे। हमको काफी नींद आ रहा है। हमको लगता है हम कॉर्नर से कल बात करेंगे, बिलीव मी, क्योंकि हमको कुछ ऐसा काम याद आ गया जो हम कल ही कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, आप लोग को नहीं पता चलेगा। वेट, व्हाट द हेल? डेस्कटॉप ऑडियो, वेबकैम ऑडियो। अच्छा, माइक्रोफोन का ऑडियो आ रहा है ना मेरा? आ तो रही। सो आई गेस हम कल करेंगे, मे बी। आई थिंक समथिंग इज बिहाइंड मी, या फिर आज ही करें। हमको समझ में नहीं आ रहा भाई, हमको लिटरली समझ में नहीं आ रहा। फक इट, आज ही खत्म कर रहे हैं। ओके वेट सेकंड, ये हो गया इधर का। लेट मी सी माई फकिंग फेस कि चेहरा सही आ रहा है कि नहीं। चेहरा भी सही आ रहा है। यस यस, इट्स कमिंग सही मे बी। क्या करें इधर? 9 मिनट हो गया बर्बाद मेरा। So let's go। ये कॉर्नर से मिलते हैं हम लोग। और पता नहीं क्या हो गया था बीच में, हमको काफी नींद आने लग गया था। हम सोचने लग गए थे कि स्ट्रीम खुला रखें या फिर बंद रखें, आई डोंट नो, बट हम स्ट्रीम चालू रखे हैं। सो चीयर्स टू माय हेल्थ। मे बी हमको स्ट्रीम बंद करने का मन कर रहा था अभी, क्योंकि हमको नींद आ रहा है, पता नहीं क्यों। Nice of you, especially given you didn't seem pleased about my previous visit. Because you came unannounced and in unfortunate company. I also had Reverend Nathaniel to contend with. Our spiritual यहाँ पे नया लाश मिला हम लोग को, ये मर्डरर को ढूंढने के लिए। I know who you are, what drives you. I'm more than happy to aid your investigation. ये आदमी बुढ़ा कैसे नहीं हुआ अभी तक? हमको ये नहीं समझ में। इसका टीचर बुढ़ा हो चुका है, I mean, इसका स्टूडेंट बुढ़ा हो चुका है, लेकिन ये जवान है।
और नथानियल वो लड़की लोग को टॉर्चर करता है, जो आदमी पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या है। Not fond of Nathaniel? Very few people are. He's cruel and capricious. He stormed in here once, grabbed a scalpel I was sterilizing over a burner, sliced my back with it to the bone, because I had forgotten to lock the storeroom. What? Hard to be fond of someone like that, wouldn't you agree? Damn. You gotta be kidding me. ये नथानियल तो काफी हरामी लग रहा है, I mean torture, और सारा victims जिस तरह से मर रहा है, ये नथानियल का ही काम लग रहा है हमको। Who's the victim this time? Joris Aquinas, a lecturer in theology at Oxenford Academy. Found this morning at his home on a catafalque made of his books. Any titles in particular? It seems all the tomes dealt with the eternal fire. Treatises critical of the faith's doctrines. Yeah, mortal sin in Novigrad. जो भी इटर्नल फायर को ऑप्रेस कर रहा है, अपोज कर रहा है, वो लोग को इतना घटिया तरीका से मार दिया जा रहा है। By the way, you and von Gratz don't exactly get along. Why is that? I had him sent to prison. You see, Joachim led the student protests in 1242, a senseless and brutal revolt. People were dying, Witcher. Those who rejected liberty, equality, and fraternity would be found in the gutter come morning. Their throats slit from ear to ear with surgical precision. Joachim had been my favorite student, but alas, I had to do something. So I reported him. Then I left the university and found work in the morgue, where none care about my past. I see. Whereas Joachim, oh, fate's ironies. Years later, he was appointed head of the very ward I had founded. Damn. But think तो Joachim जो भी है, Joachim? Joachim नाम है उसका? वही तो। How old's von Gratz? 50? 60? 53, I believe. Why do you ask? तुम इतना You look young? a little young to have been his teacher. Not surprising. For years, I've lived in the cold and dark, breathing the vapors of embalming fluids. In short, working with corpses extends one's life. Amusing, is it not? क्या? कुछ भी बक रहा है। Working with corpses तुमको young रखता है? Let's start. Gladly. Autopsy किया जाए? The wounds conform to the killer's modus operandi. The victim was bound and forced to drink formaldehyde. Next, the killer removed the eyes, placed burning coals in the sockets, then opened the rib cage and... What's this? A parchment made of human skin. A message from the murderer. The name of his next victim. Priscilla का भी नाम था पिछले में. Patricia Vegelbud. What? Do you know her? Yes. Even went to her estate once with... Gotta find her, now. You gotta be kidding me. ये साला human skin डाल के Patricia Vegelbud, concerned citizen. I have to save. Till next time, Master. या फिर हम पेट्रिशा वेगलबर्ग को कल बचाएं, क्योंकि आज मूड नहीं कर रहा है यार, आज हमको नींद आ रहा है काफी, बिलीव मी. सो आई गेस हम जाएंगे, ऑफ कोर्स जाएंगे उसको बचाने के लिए, बट कल दैट इज. आज हम स्ट्रीम जल्दी खत्म कर रहे हैं. पता नहीं आज मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा शायद, या फिर अभी हम जाएं. अगर हम जाएंगे तो हमको काफी टाइम हो जाएगा, आई मीन 2 घंटा से ऊपर हो जाएगा. मैन ये मर्डरर जहां तहां घुस के मार रहा है आदमी लोग को. और पेट्रिशा वेगलबर्ग गैरोल्ट की दोस्त है, उसका आंख निकला हुआ हम नहीं देखना चाहते, बिलीव मी. ये कौन मार रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा. हमको सीधे शक जा रहा है नेटालिस पे. वो लड़की लोग को अब्यूज करना उसको पसंद है, ज्यादातर लड़की ही मर रही है इसके हाथों. बट सारा शक इटर्नल फायर, समझ नहीं पा रहे कुछ भी. ट्रस्ट मी. हम सोच रहे हैं हम चलते हैं, बिलीव मी. नहीं हम चलते हैं.
हमसे रुका नहीं जा रहा, बिलीव में। ये कमीना को जब तक हम ढूंढ नहीं लेते ना, हम चैन से नहीं बैठने वाले। Let's go and kill this guy. Come on, Roach. Fucking hell. ये केस सॉल्व करके ही रहेंगे हम। सिटी में मर्डर्स हो रहा है, लड़की लोग मर रही है ज्यादातर। वो लोग का आंख निकाल के वो लोग का दिल के जगह छिपकली का अंडा रख दिया जा रहा है कि समझ भी नहीं पा रहे हम। I mean, ह्यूमन का काम है कि मॉन्स्टर के पास इतना दिमाग नहीं होता, एक्सेप्ट अ फ्यू। I mean, कोई ऐसा मॉन्स्टर जिसके पास इतना दिमाग होगा, क्योंकि वो काफी हरकत उसका अजीब है। सिटी गार्ड्स उसको नहीं पकड़ पाया, कोई उसको देख नहीं पाता कभी भी, और अभी वो खुले खुले हमको धमकी दिया है कि पैट्रिशिया वेगलबर्ग को मारेगा। ऐसे कैसे मार देगा? ट्रस्ट मी, it cannot kill her like that. Wait, what the fuck? Some kid was shouting. What the heck? Let's get this guy. What do you want? हमको पैट्रिशिया वेगलबर्ग से बात करना है। To Patricia Vegelbud. You think any bum off the street can... Her life's in danger. Let me in or have her blood on your hands. If you thought this up, and I'll let you in, we'll throw my arse out the door. Always thought a guard was supposed to protect his charge, not his ass. Trust me, हम सच बोल रहे हैं। I'll take you to Lady Vegelbud. Just no trickery. Understand? I understand. Come on, जल्दी लेके चलो उनको। Oh, Geralt, what a pleasant surprise. Not pleasant at all. I gotta see your mother. Her life's in danger. In danger? Come now. I saw Mother this morning. She seemed sad, true, but in perfect health. You gotta be kidding me. हमको नोट मिला है। I'm hunting a serial killer, and I've got reason to believe your mother will be his next victim. Why, even if it's true, our guards. He's exceptionally cruel when he kills, tortures his victims, cuts out their hearts. Believe me. So let's see how she is, just in case. I find this all very hard to believe, but you appear to be quite serious. हम झूठ क्यों बोलेंगे? Come on. गेरोल्ट का बात पे भरोसा रखना ही चाहिए। A fire fit for Bellatane, except it's the wrong time of year. I mentioned Mother seemed sad. Do you remember? In fact, she's in the midst of a crisis of faith. A rather serious one. We'd been to Novigrad. Mother had seen the pyres in Hierarch Square, uttered not a word on our way home. She had all the holy books, insignias, reliquaries gathered, taken outside and burnt. Then she locked herself in her room. We need to hurry. Fucking hell. ये भी इटर्नल फायर पे बिलीव करना छोड़ दी। इसी वजह से इसका अगला नाम है I need to fucking go. Hear that? Calm and quiet. All seems to be in order. अगर वो अब तक नहीं पहुंचा है ना यहाँ पे। Just to be sure. You're relentless, aren't you? Fine. But wait here, please. Mother's certainly not in the mood for guests. What? He ran out the other door! Catch him! Oh shit! कहाँ गया? What now, you piece of filth? वो तो वहाँ भाग रहा था। I saw him. Murderer's still here. वो तो You gotta be kidding me. Did I see? कहाँ गया वो? Wait, वो कहाँ है?
स्वेर हम उसको यहां पे आते हुए देखे थे। नॉट हियर। ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? अबे गधे, हम तुम लोग का साथ दे रहे हैं, इधर भी नहीं है। Where the fuck did he go? There he is! Get him! कहां? Wait, can I see him? Wait, ये लोग मेरे से क्यों? Come on, come closer. अबे पागल हो गया क्या तुम लोग? हम तुम लोग के साथ? What? Man, हम तुम लोग के साथ है बेवकूफ। You gotta be kidding me! ये लोग मेरे का प्रोग्रेस रोक रहा है। हम अब तक उसको पकड़ दिए उसे अगर You guys will pay for this, idiots. सारा गार्ड जितना बेवकूफ क्यों होता है? Gotta be kidding me. Halt! For I put a bolt between your eyes. Listen, you got the wrong guy. Save your trickery, taking you to the heiress. Well, killer's already escaped. Lead the way, hero. अब लात खाएगा ये। मेरे से नहीं, इसी से ला। Lady Ingrid, wasn't easy, but lower that crossbow before you hurt yourself. This man is innocent. Forgive me. I saw him running. Thought it was the killer fleeing. I was chasing him, and I'd have caught him if you hadn't gotten in my way. Out of my sight at once. You Mother, fucking idiots. Why did he do this to her? Why? इसी वजह से। Because she blasphemed the eternal fire, only thing that ties her to the other victims. Ingrid, I know this is a hard time for you, but usually the killer leaves a note on the body, a note indicating his next victim. May I? Very well. But you should be on your own. I do not wish to see her in this state. I do not wish to remember her like that. And let her be the last victim. Please. Sure, I will. Trust me. Believe me. Fucking believe me. Bruises, broken fingernails. She defended herself. Must be why it took him longer, and why he almost got caught. Ah! Here it is. Sweet Nettie, crippled Kate's. Growing bolder, not just the name, but the place too. Won't get away this time. एक बूढ़ी औरत को नंगा करके मारा ये। फिर से वही लेटर। Same wounds as the previous victims. Examination would be a waste of time. Gotta get to crippled Kate's, fast. वो मालूम नहीं। Guys, आज पता नहीं, हम शायद ऐसा कुछ कर सकते हो जिससे ये बच जाती, या फिर पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमको।
क्या ही करें। हमको लगता है कि पता नहीं है, अजीब लग रहा है हमको। हमको लगता है आज के लिए इतना काफी होगा, बिलीव मी। इस वजह से नहीं, हम काफी थका हुआ फील कर रहे हैं। आई मीन हमको सोने जाना है, ओके? हमको नींद आ रहा है तब से। और यहाँ पे ये हैवान किलर पता नहीं क्या क्या किया जा रहा है, बिलीव मी। सो हम सोच रहे हैं हम आज का लाइव स्ट्रीम खत्म करते हैं यहीं पे। आई गेस आज का लाइव स्ट्रीम ऐसे भी कुछ खास क्या, भले कोई ज्वाइन किया नहीं है किया हो, बट डैम आज क्या क्या नहीं हो गया। ये किलर इतना गंदा तरीका से आदमी लोग को मार रहा है कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता, और इसको हम अभी तक पता तक नहीं लगा पाए ये है क्या। मैन, बट ट्रस्ट मी, ओ ट्रस्ट मी, नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम वी आर गेटिंग दिस गाय। ये इस बार काफी बोल्ड हो चुका है, बिलीव मी। गेरोल्ड भी ऐसा बोला। पहले ये सिर्फ नाम लिख के छोड़ता था किलर का, लिटरली जिसको ये मर्डर करता था उसका स्किन पे नाम लिखता था, स्किन का पेपर बनाता था। और अब ये नाम और एड्रेस दोनों जगह लिखा है कहां ये नेक्स्ट अटैक करने वाला है। विल गेट हिम देयर, बिलीव मी। आई एंड गेरोल्ड विल श्योरली किल हिम। पर तब तक के लिए अलविदा। हमको लगता है आज का स्ट्रीम यही खत्म करेंगे। हम कल वापस आएंगे जरूर, या हम ब्रेक ले लें, हमको समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं यार क्या करें, या खत्म ही करते हैं इसको। को समझ ही में नहीं आ रहा। व्हाट द फक, कितना कंफ्यूज्ड है हम। ऐसे कोई देख नहीं रहा स्ट्रीम, तो और भी थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। कितना घंटा का स्ट्रीम हो गया भाई। क्या करें, खत्म करें या फिर हमको समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। हम ये किलर को हम समझ तक नहीं पा रहे ये क्या चीज है, और हम थके भी हुए, हमको नींद आ रहा, बट हमको जानना है ये क्या करने वाला है। सो लेट्स गो। ये उस बूढ़ी औरत को भले मार दिया, आई मीन कैसे मार दिया यार। हम पहुंच गए थे टाइम पे, हम एकदम टाइम पे पहुंचे हुए थे, बट ये एक कमीना गार्ड लोग किलर को पकड़ने के चक्कर में उसको पकड़ने के बजाय हमको पकड़ लिया। God be kidding me. I'm just getting the hell out of here. Believe me. हम यहां से निकल रहे हैं। Come on, रोच। उसका इतना ज्यादा औकात हो चुका है ना कि वो एड्रेस और नाम दोनों लिखा है किसको नेक्स्ट मारने वाला है वो, और इतना कमीना की तरह वो मार रहा है कि हमको मन नहीं कर रहा छोड़ने का। Let's go. अबे रोज तेरा अलग नशा क्यों चलते रहता है, बाहर निकल जाए यार। Come on. Fuck off, हम पैदल ही जा रहे हैं। Hello, bro. Yesterday, Hindustani Otaku told me about you, and I really think you deserve more support. Thank you, Anime Black X. I guess I deserve more support, bro. Thanks for joining the stream anyway. Come on. Let's go. हम लोग चल करके ही ये एरिया देख लेते हैं। कम ऑन, अगर हम ये किलर को ढूंढ पाए जल्दी तो व्हाट द फक। हमको नोविग्राड का सिटी जाना होगा। स्वीट नेटी एट क्रिपल्स गेट्स। डैम, दिस इज गेटिंग इंटेंस। अगर वो मेरे से पहले फिर से पहुंच गया और मार दिया तो विचर होने का फायदा ही क्या है। हम जल्दी पहुंचना चाहेंगे। नोविग्राड काफी दूर नहीं है। कैन बिलीव हम उसको बचा नहीं पाए। कमान रोज, तेरा भी स्टैमिना अभी खत्म हो रहा। Let's go. Man, we gotta hurry. किलर मजाक नहीं है, ये 3 आदमी को पहले ही मार चुका है।
अगर हम इसको अभी भी पकड़ लेना तो ये मेरा हाथ में आ सकता है। You think so, man? I mean, I'm not that good, believe me. I just play the game and talk nonsense, believe me. बस बात करते रहते हैं खेलते वक्त, और क्या, और कुछ खास नहीं है। Let's see. क्रिपल केट्स ना, क्रिपल केट्स तो एक ब्रॉथल है शायद। मैन, ये अब हाई लेवल 18+ सीन होने वाला है, हमको लग रहा है। हमको जल्दी पहुंचना है। रोज तुम बाहर ही रुक, हम मैप पे देखते हैं क्रिपल स्केट कहां पे है। क्रिपल स्केट काफी अंदर है, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। उस साले से पहले पहुंचना होगा हमको वहां पे। और ये सिर्फ लड़की लोग को मार रहा है। हमको क्यों लग रहा है ये इटर्नल फायर का कमांडर है। Yes, I do watch anime, bro. I mean, I haven't watched plenty of anime. I mean, I have watched a few. I'm a huge Dragon Ball fan, though. Dragon Ball Z, Dragon Ball Super. Decomposing flesh. Human flesh. Decomposing human flesh? यहाँ पे? Wait. Getting fucked. हम काफी सारा और एनिमे भी देखे हैं, जैसे कि जोजो's बिज़ार एडवेंचर, ग्रेट टीचर ओनिजुका, और कौन सा अटैक ऑन टाइटन भी देखे हम। I mean, इतना ही हम देखे हैं, इससे आगे नहीं देख पाए हम कोई भी। वेट, हम लोग क्रिपल स्केट आ चुके हैं। ओके, ये दरवाजा तो लॉक है। I think I will. Okay, yeah. Let's see. Sweet Nettie, where is she? Upstairs, but she's with a very important client. Do not disturb them. I know. वो मिल गया, हाथ पकड़ा गया इस बार तो। वो स्वीट नेटी के साथ उसका रूम में पता नहीं क्या कर रहा है, बट I'll fucking find him this time. हम लोग तब से उसके पीछे। Where the hell is he? No one will hear you, bitch. Not a You gotta be kidding me. Though, whole town will hear you in a minute. Yet again you disturb me, and I so dislike being disturbed. I was to play with sweet Nettie, render her not so sweet, but I shall see to you first. What? No इससे हम बात कर ले पहले। Formaldehyde, coals in my eye sockets. यही है ना? What the fuck are you on about? Murder. You killed Fabian Meyer, Patricia Vegelbud, and many others. ये लड़की को टॉर्चर कर रहा है। Bollocks. You're mistaken, vagrant. What? ये नहीं मारा? Wait. Letter कौन? Found a message on Patricia's body. Led me here to crippled Kate's, to sweet Nettie. If you didn't leave it, who did? ये टॉर्चर कर रहा है। I see we must talk calmly. हमको मालूम है इसको लड़की को टॉर्चर करना पसंद है, बट ये नहीं Strange मारा। enough, I don't announce these outings far and wide. There's but one man who. That's impossible. He treats even corpses with kid gloves. The coroner said you were busy, that you wouldn't visit the morgue. Gotta go after him. Go. But to warehouse 12 at the docks. He's there this time of day procuring supplies. What? इतना बड़ा धोखा कैसे हो सकता है मेरे साथ? Business with sweet Nettie. After all. इसको क्या लग रहा है हम इसको मारने देंगे? भले ये किलर नहीं है, लेकिन पक्का। Then you'll pay again for her. भले ये असली मर्डर नहीं, लेकिन यहाँ पे तो ये काम कर ही रहा है घटिया। Bring it on. तुमको क्या लगा था तुम बस एड्रेस वेड्रेस बता देगा तो हम तुमको छोड़ देंगे? Man, oh man. What? वो फ्रेम कर रहा था।
ये इटर्नल फायर का प्रीस्ट था, हमको मालूम है इसको आदमी लोग को टॉर्चर करना पसंद है। वो कॉर्नर असली में वो मर्डरर है, वो फंसाया इसको ताकि किसी का शक उस पे नहीं जाए, और वो इसी तरह से मारता भी था। वो लड़की लोग को ज्यादातर मारता ताकि सारा शक ये आदमी पे जाए। बिलीव मी, मेरा दिमाग उड़ चुका है इसके बारे में सुन के। वो है कहां? वो डॉक्स में ना, लेट्स फेस हिम देयर। हमको स्ट्रीम खत्म ही करना था, बट दिस जस्ट गॉट इंटेंस, बिलीव मी। अगर वो इतना बड़ा धोखा दे सकता है, वो बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है। वो हमको एक सेकंड के लिए ट्रिक कर ही दिया था। अगर हम इसको मार देते हमको कभी पता नहीं चलता असली मर्डरर ये है। ये हैवान को सिर्फ लड़की लोग के साथ टॉर्चरिंग करना पसंद था, बट ये कॉर्नर तो अलग ही गेम खेल लिया है। किधर है ये? लेट मी सी दिस गाय। मैन ओ मैन, दरवाजा कहां है? दरवाजा नहीं खुल रहा ये। I guess we finally meet. ये इंसानी है ना? Run out of formaldehyde. I underestimated you. You almost caught me in flagrante delicto. Now you've seen through my bluff with Nathaniel. You think you could trick me? Although you've not divined all, I see. Had you, you would have drawn your silver sword. Silver sword मतलब ये monster है. What are you? A vampire. Higher, of course. ये vampire? तो तुम हायर वैम्पायर को तो खून पीना पसंद है, ये मारता क्यों था आदमी लोग को, खासकर लड़की लोग को, वो भी ऐसे आंख निकाल के दिल निकाल के? क्या? Got a reason for killing, a reason to torture. I thought you'd figure that out as well. The symbolism's rather obvious. Coals for those who are blind. ये इटर्नल फायर को फॉलो करता था। You gotta be kidding me, एक वैम्पायर? To replace their cold, doubting hearts. Fire down the throat that... Yeah, symbolism's clear. What's not is why a vampire would kill in the name of the eternal fire. वही तो. Should be equally obvious. I concur with the church's diagnosis. Novigrad is a fallen city. Its population amnesiacs to the very concepts of decency and morality. So I decided to remind them in a manner they'd be certain to notice. Foolish. पागल हो चुका है। ये प्रिसिला को अटैक किया, ये बहुत बड़ा गलती किया। गेरोल्ट की दोस्त को अटैक क्यों किया ये? You're out of your fucking mind. You're a sick fuck. I never expected you to understand. You're a cynic and an opportunist. I sensed it from the start. Ah well, this conversation has grown unpleasant for both parties. किसी को मारना कभी भी अंडरस्टैंडेबल नहीं हो सकता, बिलीव मी। I last fought a Witcher 2 centuries ago. I do hope I remember how it's done. And have you faced one of us? तेरे जैसा मेरा एक दोस्त भी था। You couldn't have. You would have survived. Bring it. Shit. ये गायब हो चुका है। हाँ, मेरे पास ब्लैक ब्लड है, बिलीव मी। ये पोशन चढ़ा के हम इसका खेल खत्म करने वाले हैं अभी। एनचांस्ड ब्लैक ब्लड। लेट्स गो फुल पावर मैन। ओह शिट, इसके पास अपर हैंड है, ये काफी स्पीड है इसके पास। हमको लगता है हमको वैम्पायर ऑयल डालना ही पड़ेगा। थिंक आई हैव वैम्पायर ऑयल। वैम्पायर ऑयल, कम ऑन, यू कैंट बी सीरियस। क्वीन का शील्ड एक बार में ये निकाल लिया। वेट। Come on. डायमेरेटियम बॉम्ब इसको गायब नहीं होने देगा। अब गायब होकर दिखा।
He can use magic? नहीं. हम भी मैजिक नहीं यूज कर सकते ये एरिया में. ये भी डिस्टेंस मेंटेन कर रहा मेरे से. चाहे मेरेटियम बॉम्ब का इफेक्ट खत्म होने का इंतजार कर रहा शायद. इसको इग्नि से कुछ नहीं हो रहा साले को. मेरे पास ब्लैक ब्लड खत्म तो नहीं हुआ ना? What? ये हमको ट्रिक कर रहा बार बार. Bring it on. Show me what you got. यहां पर भी एक नोट था. Fucking dead. ये था, ये वैम्पायर था. Remember dear fear. ये बार बार एक ही लेटर क्यों छोड़ता है? इटर्नल फायर को ये प्रेस करता था. हमको समझ में नहीं आया ये मारता क्यों था. इसका मोटिव लिटरली हमको समझ में नहीं आया. ये लिटरली इतना आदमी को मार दिया, गलत आदमी को फंसा रहा था. Whatever we killed him, I killed him. Maybe अब डैंडलाइन को जाकर के बता दें उसकी गर्लफ्रेंड पे अत्याचार करने वाला मर चुका है. अच्छा बात है प्रिस्सिला जिंदा बच गई है. डैम, हम स्ट्रीम खत्म ही करने वाले थे पर ये रास्ता हमको मिल ही गया इसको मारने का. एक गलती होता और ये मेरा हाथ से निकल जाता. अगर हम उस समय नेटालिस को मार देते वहां पे, या नेटालियन जो भी नाम था उसका, ये कभी नहीं मिलता मेरे को. ये अच्छा खासा प्लान रखा था कि हम उसको मारे. वो लड़की को वहां टॉर्चर कर रहा है, हम गुस्सा में घुस के उसको मार दिया और खत्म. अगर हम उससे बात नहीं करते तो हमको कभी नहीं मालूम चलता कि ये यहां छुपा हुआ है. और ये लिटरली उसको फ्रेम कर रहा है मर्डर्स के लिए. हम बस अब निकलना चाहते हैं और डैंडलाइन को बताना चाहते हैं कि एवरीथिंग इज ओवर मैन. डैम इट. कम ऑन गेट आउट. रोजमेरी अंदर राइम में जाना है या फिर रोजमेरी अंदर टाइम में जाना? हम लोग को कहां जाना है? या फिर डॉक्टर के पास जाना है? मैन वो डॉक्टर, उसका तो हालत ही खराब हो जाएगा सुन के कि उसका टीचर एक वैम्पायर था. आई मीन ये एक्सप्लेन करता है इसका इटर्नल यूथ. और ये कंसर्न सिटीजन्स का नोट्स हर जगह कैसे पड़ा हुआ है अभी? व्हाटएवर. हमको वो हॉस्पिटल जाना होगा राइट? प्रिस्सिला रिकवर की कि नहीं आई डोंट नो, बट हॉस्पिटल यहीं पे है मेरा. ये तो डैंडलाइन. How's better? Right? man. Yes. ये मरी नहीं, बहुत अच्छा बात है. Did you take care of what I asked? मर चुका है वो. Yeah. The Witcher's way. Higher vampire Thank you, था. What the Geralt. From me and Priscilla. Did my part. Your turn now. Take care of her. Good care. I will. You'll see. Treat her better than the Dryads of Broccolon could. She's talking again. Nice surprise.
isn't it? Professor von Gratz told me her wounds are healing faster than a troll's. Not the most flattering comparison, but encouraging. Maybe she might even sing against Devil May Cry. Yes, I will definitely try. मेरा प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है वो. Dandelion and वो भी चालू करेंगे हम कुछ समय में. Got a nice ring to it, doesn't it? Sounds great. Good luck, Dandelion. On stage and off. Well, looks like our job here is done. इससे बाद में बात करेंगे. Farewell. तो हमको लगता है आज का स्ट्रीम के लिए इतना काफी होगा. शुरू में तो आदमी ज्वाइन किया, अभी जो भी है, अभी एनिमे ब्लैक एक्स अभी तक है शायद ज्वाइन. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द स्ट्रीम माय फ्रेंड. लेकिन अभी हम खत्म करने वाले हैं, काफी देर भी हो गया हमको. थैंक्स अगेन जो भी यहाँ पे देख रहा है उसको बाय. दैट्स इट. आज काफी कुछ हो गया. डैम इट, समझ में नहीं आया हमको. आई मीन शुरू से ही इसके पीछे पड़े हुए थे और हम दिमाग हिला दिया. ये वैम्पायर कैटकैन. Well, let me end the stream then. Bye guys. जो भी देख रहा है. थैंक यू मैन. स्ट्रीम पसंद आया तो बहुत बढ़िया बात है. ऑफ कोर्स स्ट्रीम कंटिन्यू करेंगे. Thanks again for joining.